Hey everyone. All right. Hey guys, good evening. How are you all doing? Audio check कर लो guys. Is the audio okay? Are you able to hear me? शुभम नहीं भाई. इतने भी अच्छे नहीं हैं. Hi Mansi, hey Nalin, good evening. Hi Aditya, hello Ranjan. How are you all doing? Alright, this is our 5th lecture on number system. Today we'll be focusing on factors and multiples. Under this section we'll be looking at factors. What do factors mean? How to find out number of factors for any given integer with and without condition. How to find out sum of all the factors of a given integer and how to find the product of all the factors. Yeah. नहीं नलिन, नहीं हुई आज, नहीं हुई आज. नया साल है, खाता खोलना बाकी है अभी. कल होगा, कल 10 o'clock. Alright, so this is today's agenda. Hi Prakriti. बाबू ब्रो का दिल टूटने के लिए बना है, टेंशन मत लो. जब उसको दिल दिया गया था तभी बोल के दिया हुआ था कि ये ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, चाइना का माल है. Alright, these are all the ongoing batches. These two have just started today. This will start day after tomorrow. Get yourselves enrolled into this. I am also starting a batch on April 12th. We'll be covering entire algebra there. Yes, you can enroll into these batches by taking the subscription. You can take the plus subscription by picking any one of these packages or the 12 and 24-month ones. These are the most preferred ones. Do not forget to use Surana Live as the referral code. You can also go for Iconic if you're looking for personal mentor and personalized test scores, test reports, analysis of the test. 12 months, 24 months option है यहाँ पर भी. Use referral code Surana Live for your discount. चलो शुरू करें. Shall we begin? Hi Shreyashi, good evening. Definitely Nalin, आज रात तक पूरे हफ्ते का schedule भेज दूंगा मैं. Hi Shubham. Hi Gaurav. Hello Soumya. Chalo, let's start. Let's talk about factors. You know, a factor is a number that can divide a given number, correct? So if I take a number like 6, I know 6 can be divided by 1, 6 can be divided by 2, 6 is divisible by 3, and 6 is divisible by itself, right? So for any given number except for 1 and the number itself will be a factor. Apart from that, if it's not prime, if it's a composite number, then there will be other numbers also that will be the factors, right? So for any given natural number n, if the remainder, when n is divided by any number f1, first factor, the remainder should be 0, right? That is, if I take 6, if I divide it by 1, the remainder when I divide 6 with 1 is 0. The remainder when I divide 6 with 2 is 0. The remainder when I divide 6 with 3 is 0. The remainder when I divide 6 with 5 is 1. So 5 is not a factor. Are you getting it? When I divide 6 with 6, the remainder is 0. So upon dividing, if the remainder comes up to 0, these are called the factors. So what are the factors of 6? 1, 2, 3 and 6, correct? So f1, f2, f3 all the way till f. Let's say if a number has f factors, if a number has f number of factors, then all of these will be greater than, all of these factors, f1 will be less than n, f2 will be less than n, f3 will be less than n. If there is a last factor ff which is itself, it will be equal to the number. Cool? I hope you understood this. Yes, hi Sachin. Hi Bhaiya ji. Hello Manish. Yeah guys, listen to Gaurav. Video pe like kar lo. Chalo.
Look at this question and quickly answer. Which of the following is not a factor of 1344? 1344 का कौन सा नंबर फैक्टर नहीं है? डू नॉट यूज कैलकुलेटर. यस, ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से करोगे तो ये सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चे जैसा रहेगा क्वेश्चन. डोंट यूज अ कैलकुलेटर फॉर दिस. क्विकली ट्राई दिस आउट. गौरव सेज D 28. हाउ अबाउट अदर्स? Gaurav says D 28 is not a factor. Anyone else? Mansi says D. Okay. Jaldi guys, 30 seconds left. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. So if I say this is n, right? If I say this is n, or let's say this is f, so when I divide 1344 by f, the remainder should not be equal to 0. That's what we are looking for. Should not be equal to 0. Chalo, quickly try this out. Superb. Aditya, Anamika, Shreyashi and Nalin say C. Bhaiya ji says A. Bhaiya ji, chalo, okay. So what do? We basically check if a number when divided, if 1344 when divided by one of these numbers will give a remainder 0 or not, right? So 12, we have to check if the number is divisible by 12. 12 can be written as 3 into 4, correct? Co-primes. These are co-primes. So I can write it as 3 into 4. Is this number divisible by 3? 1 plus 3 plus 4 plus 4. How much is it? 8, 9, 12. Divisible by 3? Yes. Yeah. What about 4? 4 ka kya hai? Divisibility check. The last two digits must be divisible by 4, correct? Are the last two digits divisible by 4? 44 divisible by 4? Yes. So this number is divisible by 12, so 12 can't be our answer. 12 is out. They're asking which of these is not a factor. Yes, so 12 to hai bhaiya ji, your answer is wrong. Let's go for 16. Now what do we do for 16? 16 is 2 to the power 4, but checking last 4 digits is just as checking for 1344, right? So instead what do? You can take 1344, split it. Yes, split 1344. Yeah, how can you split 1344? Let's say if I split it as 1600 and minus 256, correct? 1600 minus 256 is 1344. Agreed, everyone? Is 1600 divisible by 16? Yes, it is. Is 256 divisible by 16? Yes, it is. 16 square is 256. So 1344 is also divisible by 16. 16 can't be our answer either. Yeah. Look at 26 and 28. Now you have two numbers, 26 and 28. 26 can be written as 2 into 13. It is divisible by 2 because the last term is an even number, but for 13 it becomes a tough task for us to check, correct? So what you can do, split again. 1344, I know 1300 is divisible by 13. Check. But I need to also check if 44 is divisible by 13. Is 44 divisible by 13? Yes, no? No. 44 is not divisible by 13, correct? 13 thrice is 39. 13 thrice is 39. 13 4 times is 52. Do you have a 44 anywhere in between? No. So if this is not divisible, then this is also not divisible. Ultimately 26 will be our answer. And 26 will be our answer. 26 is the right answer. You can also check for 28. अगर 13 का नहीं सूझ रहा उस time, 28 पे check कर लो. 28 is 4 into 7. It is divisible by 4. We've checked. तो 4 का तो कोई tension नहीं है. With 7 what do? Take last digit, double, subtract from the rest. करना है वो headache. Do you want to do that?
Definitely not, right? So instead what would you do? Instead क्या करोगे? Split it. 1344 can be written as 1400 minus 56, है ना? 1344 को 1400 minus 56 लिख सकते हो. 1400 divisible by 7, yes. 56 divisible by 7, 8 times, yes. मतलब 1344 is divisible by 7 as well as by 4, so it is divisible by 28 also. So what is our answer? 26. बुझे? Yes, no. Hi Sakshi. Hello Devendra. Oof, not was there. Not was there. Not को तो मैंने बाद में भी highlight किया था. Say yes if you've understood this. Chalo, let's move on. Now let's go to prime factors. What do you mean by factors that are prime? Yes, any given number, whether it's prime or not, prime or composite or not, you can write it in terms of prime. Except for one, right? Except for one, you can write it as multiples of prime numbers, correct? So if n is given as a into b into c into d, yes, and if I can raise it to some power, a power p, b power q, c power r, d power s, then if a, b, c and d are prime numbers, then they are called prime factors. Yes, then they are called prime factors. I'll give you a very simple example. Let's take a number like 50. Yes, 50 के prime factors क्या होंगे? Quickly tell me, what will be the prime factors of 50? 50 can be written as 2 into 5 square, correct? 2 power 1 into 5 square, है ना? 25 into 2. तो 2 एक prime factor है, 5 एक prime factor है, right? So 2 and 5 are what? Prime factors. Are you getting this? Yes, so 2 and 5 are what? Prime factors of the number. There are other factors also. Other factors क्या क्या रहेंगे? 1 रहेगा, yes, 10 रहेगा, 25 रहेगा. These are not prime numbers. 50 रहेगा. These are not prime numbers, correct? Prime numbers क्या है? 2 और 5. समझ गए? हाँ कि ना? सबका हाँ है. अगर सबकी हाँ है तो चलेंगे आगे. 1, 2, 5, 10, 25, 50 सारे फैक्टर्स है, बट इसमें से प्राइम कौन से हैं? 2 and 5. So this part, this action, this entire thing is called prime factorization. That is, you are writing the numbers, you are writing the given number in a form of multiples of prime numbers. ठीक है? Product of prime numbers. इसमें पावर का कुछ खेल नहीं है अभी के लिए. The power doesn't matter for now, अभी के लिए, but आगे जाके में. चलो, read this question now. Try and answer this. Quick guys, try करो. Nalin says D. Nalin बोल रहे D is the answer. Mansi says D. Again, let me highlight for people who might have missed it. Not. This K is product, okay? 14 into K, 95 into K, okay? K is not a digit of the 3-digit number, nahi. This is 14 into K. 15, 95 into K, ठीक है? Everybody says D. श्रेयसी, आदित्य, गौरव, अनामिका, शुभम, भैया जी सब D बोल रहे हैं. Beautiful. So let's look at the question. क्या बोल रहे हैं? A is 14K. 14K is what? K कुछ भी रहने दो, अभी के लिए K कुछ भी रहने दो. K into 2 into 7. Yes. And what is B? 95K. 95 is what? What is 95? 95 is given as K into 5 into 19. है ना? Agreed? So if I multiply this, A into B, I will have 2, I will have 5, I will have 7, I will have 19, I will have K 2 times. Agreed?
तो 2 is a factor, yes 2 is a factor. Is 5 a factor? Yes. Is 7 a factor? Yes. Is 17 a factor? No. This is your answer. Beautiful guys. Chalo, now what we are going to do now is prime factorizing. What if k is 17? वो देना चाहिए था, वो नहीं दिया हुआ है तो टेंशन नहीं है, चिल करो. Yes, you have proof for 2, 5 and 7. 17 is a maybe. What if k is 23? What if k is 3? Yes, there's no saying as such. Huh? Chalo, let's prime factorize the given set of numbers. Okay, let's start with 36. Let's start with 36. How can you write 36 as a multiple of two or more prime numbers? So इसको क्या करोगे? Write 36. Best way to do it is to write 36 as product of two numbers that are very close to each other, right? In this case it will be what? 4 and 9. So 4 is what? 2 square into 3 square. So 36 can be written as 2 square into 3 square. Yes. Quickly try 91. Very good guys, beautiful. Try 91 now. ये आपका homework है. I know 77 का कुछ homework जितना सीन नहीं है, but ठीक है. 91 को लिखो. ब्यूटिफुल. प्रणय वेरी गुड. खुशी कर लिया तो ठीक है. अनामिका से 7 times 13. वेरी गुड. सो 91 is a product of two prime numbers 7 and 13. yes, let's keep this as homework. Try 130. जल्दी से 130 ट्राई करो. हाउ कैन 130 be written as product of prime numbers? 130. So again, what do you do? Try to split it. Try to split it. You can split this as 65 and 2. है ना? 65 twice is 130. तो क्या हो जाएगा? 65 is 13 into 5. है ना? So 2 into 5 into 30. Yes. Why are we doing this? ये अपन क्यों कर रहे हैं अभी? Because we will be using this prime factorizing for a lot of things, right? Prime factorizing is used to find out number of factors, is used to find out sum of factors, it's used to find out product of factors. It will also be helpful when you have to find out LCM and HCF, है ना? चलो एक और करेंगे. Let's do 280. करो जल्दी 280. बाकी सब आपका होमवर्क है. Do 280. बाकी सब आप बाद में प्रैक्टिस कर लेना. चलो जल्दी 280. Write 280 as a product of prime numbers. टू इंटू 5 इंटू 11 इंटू 9. कौन से वाले का है भैया जी? 280 का पूछ रहे. is written as what? You can write 280 as ऐसे ही स्प्लिट कर लो. चलो 280 can be written as 4 into 52 है ना? Sorry, 4 into sorry 70, and 70 is nothing but 7 into 5 into 2. So this is 2 cube into 5 into 7. Yes, direct 8 से भी divide कर सकते थे. We could have directly divided it by 8 also, but okay. Yes, so 280 is what? 2 cube into 5 into 7. Yes, now we will be using all this. ये बाकी के homework है, बाद में try कर लेना. We'll be using this prime factorizing to go for number of factors and all that, right? Now let's go for pair of factors. If you take any number, let's say 60. Yes, 60. इसके अगर मैं factors list down करूँ, if I sit and list down all the factors, let's do that, no? We're sitting simply only, no? चलो लिस्ट डाउन करेंगे. 1 डिविजिबल, हाँ. 2 से, हाँ. 3 से, yes. by 4, yes. by 5, yes. by 6, yes. 7, no. 8, no. 9, nope. 10, yes. So now look at this. After this number क्या हो रहा है? 6 into 10, 60. 5 times 12, 60. 4 times 15, 60. 3 times 20, 60. 2 times 30, 60. 1 times 60, 60. Yes.
So for any given number you can form pairs like this, right? So if I say n can be written as, if these are the factors f1, f2, f3, f4 all the way till ff, अगर ये factors हैं तो I can write the number as f1 into ff, that is first factor into last factor, 1 into 60, 60. Again second factor into second factor from the bottom, that is 2 into 30, है ना? तो ऐसे pair of factors में you will get the number itself. Yes, this will keep going on all the way till middle. Now what if the number was a number like 9, या चलो 36, 25. What if the number was 25? तो क्या होगा, इसके factors क्या हैं? 1, 5 and 25, है ना? Factors of 25 are what? 1, 5 and 25. So 1 into 25 is a pair. What happens to 5? What happens to 5? 5 का कोई है क्या ग्रुप बनाने वाला? 5 बस सिंगल रहेगा, जिंदगी भर लोगों को रिलेशनशिप एडवाइस देगा, राइट? हर बार वैलेंटाइंस डे पे आई एम सिंगल AF के पोस्ट डालेगा, करेक्ट? सो 5, बिकॉज 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 गेट्स मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, 5 into 5, है ना? Yes, so you can form the number by multiplying factors. Sir, background noise. Yes, पीछे पार्टी चल रही है तो मैंने उनको बोला है कि make some noise. सिर्फ आपको सुनाई दे रहा है अचल के, और किसी को भी सुनाई दे रहा है? Guys, okay, quickly try this example. तेरी पानी नहीं है। चर्चर हो रहा है जैसे कोई वेल्डिंग कर रहा है। शुभम, आप वेल्डिंग की दुकान पे आप कितने दिन थे भाई? बहुत एक्सपीरियंस लग रहा। मैकेनिकल इंजीनियर तो नहीं हो कहीं? वर्कशॉप में तो नहीं जाते थे? एवरीबडी से C5, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो सी, लुक एट दिस, वी हैव टू राइट 20 as a product of two numbers, but keeping in mind that both are less than 10, right? Both do not exceed 10. Yes, so 1 into 20 would work? No. 2 into 10 would work? No. So what else is left? 4 into 5, right? So I know 20 can be written as 4 into 5, but what is said? A is less than B, which is less than 10, so B has to be greater than A. That means 5 is greater than 4, B का value is C5. Cool? अच्छा, मैं एक बार चेक करता हूँ सचिन, रुको, लेट मी चेक। तब तक अपन, अच्छा ठीक है, चलो एक बार नंबर ऑफ फैक्टर्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो साउंड का क्या सीन है मैं चेक करता हूँ। पीछे जाके देखता, पर्दे के पीछे कोई वेल्डिंग तो नहीं कर रहा? स्टैटिक नॉइज आ रहा है? आप ऑडियो इंजीनियर हैं? अच्छा ठीक है, सॉरी, चलो करेंगे, अभी सेट करेंगे। एडजस्टेबल है ना? सुनाई तो दे रहा ना मैं जो बोल रहा हूँ? वो सुनाई दे रहा है ना? तो अभी के लिए एडजस्ट करते हैं, ये नंबर ऑफ फैक्टर्स का सीन खत्म होते हैं मैं जाके चेक करता हूँ, ठीक है? सो लेट्स लुक एट नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी जैसे छोटा नंबर था, राइट? वी हैड स्मॉल नंबर्स लाइक 36, वी हैड नंबर्स लाइक 60, दीज वेर इजी फॉर अस टू फाइंड आउट, राइट? कितने फैक्टर्स हैं, लिस्ट डाउन करने में ज्यादा कुछ टाइम नहीं लगता था, है ना? बट व्हाट इफ द नंबर इज बिग? Yes, let's say like 2150. Yes, a number like 3600. 36 का तो निकाल लिया कोई नहीं, 3600 के निकालने बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा, करेक्ट? So if I take 3600, yes, पहले चलो 36 का करके देखते हैं। Yes, 36 can be written as what? 2 square into 3 square, correct? 36 can be written as 2 square into 3 square. इसके अपन अगर लिस्ट डाउन करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 6 9 12
18 and 36, राइट? कितने हैं? काउंट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, राइट? सो दिस 9, these numbers I can form by doing what? Taking 2 square. yes, तो 2 square में क्या रहेगा? 2 power 0 2 power 1 2 square. yes, listen to this carefully, ये कंडीशन वाले में काम आएगा. 2 power 0 2 power 1 2 square, है ना? 2 power 0 is what? 1, तो 1 भी तो एक फैक्टर है. If I multiply one term of this into one term of this, 3 power 0 3 power 1 3 square. yes, अब चलो एक एक को इसको ग्रुप करते हैं. 2 power 0 into 3 power 0 is what? 1, है ना? 2 power 1 into 3 power 0 is what? 2. Are you seeing this? 3 power 1 into 2 power 0 is what? 3. 2 power 2 into 3 power 0 is what? 4. yes, 2 power 1 into 3 power 1 is what? 6. तो ये क्या हो रहा है? We are basically forming combinations of these two numbers, right? तो यहाँ पे कितने options है? 1 2 3 options are here, 1 2 3 options are here, so 3 cross 3 9 options रहेंगे. 9 is the number of factors. ये आया समझ में आप लोगों को? yes, so if a number n can be written as a power p into b power q into c power r, provided a, b and c are prime numbers. yes, a, b, c should be prime numbers. so once you prime factorize the given number, take the powers, add 1 to each of them and multiply p plus 1 into q plus 1 into r plus 1 and so on. this will give you the number of factors. confusing है ये कंफ्यूजिंग है? That's it, Sakshi. Correct. yes. so let's take a bigger number. चलो 60 लेते हैं. हाँ, let's take 60. so 60 can be written as what? 12 into 5, which is 2 square into 3 power 1 into 5 power 1. correct? yes. तो इसके अगर मैं पॉसिबिलिटीज निकालो, 2 स्क्वायर में क्या क्या आएगा? 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2. 3 पावर में क्या आएगा? 3 पावर 0 3 पावर 1. क्यों 3 पावर 0 5 पावर 0 2 पावर 0 भी कंसीडर कर रहे हैं? क्योंकि 1 भी तो एक फैक्टर है ना. 1 is also a factor, right? that's why. yes, so 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 के सारे पॉसिबिलिटीज. 3 पावर 0 3 पावर 1 3 के पॉसिबिलिटीज. 5 पावर 0 5 पावर 1 5 के पॉसिबिलिटीज. now find out the number of options. यहाँ पे कितने ऑप्शंस है? 1 2 3 3 options here, 1 2 2 options here, 1 2 2 options here. when I multiply them, what will happen? 6 twice is 12. so there are totally 12 factors for the number 60. yes, और अपन ने वो देखा है already, right? 60 के सारे factors we sat and found them out, right? 1 2 3 4 5 6 10 12 15 15 20 30 60, ये सारे 15 सारे 12 फैक्टर्स, all 12 फैक्टर्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अंडरस्टूड? सो व्हाट इज दिस? बेसिकली 2 पावर 2 तक तो था, 2 तो था, राइट? सो 2 plus 1 3. दिस 3 is nothing but 2 plus 1. दिस 2 is nothing but ये जो 1 है इस पे प्लस 1 plus 1. Another 2 is what? This 1 plus 1. Are you getting it? So you add 1 to the powers of prime numbers. Prime factors के powers पे 1 add करो और उनको multiply कर लो, number of factors आ जाएंगे. Yes? चलो quickly try this out. How many factors does 640 have? Quick. देखते who can answer. भैया जी क्योंकि हम combination ले रहे हैं ना, combination ले रहे हैं तो 1 into 1 into 1 फिर 1 होगा. समझ रहे हो? 2 पावर 0 इंटू 3 पावर 0 इंटू 5 पावर 0 वो 1 बनेगा. यस, 2 पावर 1 इंटू 3 पावर 0 5 पावर 0 वो 2 बनेगा. तो अपने को प्रोडक्ट में निकालना है. प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विल गिव अस आर आंसर, उस हिसाब से आर फैक्टर, है ना? कूल. नलिन सेज डी 16, प्रणय सेज 16, वेरी गुड. अनामिका says 16, Sakshi says 16, beautiful. Others?
जल्दी करो, कोशिश करो, वेरी सिंपल दिस इज। Very good, amazing guys. So how do I write 640? I'll tell you, 64 is 8 square है ना, तो इसको लिखो 8 square into 10. 10 में भी एक 2 है, एक 5 है. Yes, this is 2 cube. 2 cube the whole square is 2 power 6. This is 2 power 7 into 5. Correct? That's nothing but 128 into 5. 128 into 5 is 640. Yes. So now for the number of factors f, what do you do? Take the power. यहाँ पे क्या है? 7. So 7 plus 1. What is the power here? 1. Multiply it with 1 plus 1. So what do you get? 8 into 2, 16. Understood now? Makes it so much easy now. Yes. So 2 power 7. This basically means what? Now an understanding of this समझा रहा हूँ इसको. 2 power 7 में क्या क्या include होगा? 2 power 0 भी होगा, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 5, 2 power 6 and 2 power 7. 5 power 1 में क्या होगा? 5 power 0 and 5 power 1. Yes. Now I know 1 is a factor. 1 कैसे निकालूंगा मैं? 2 power 0 into 5 power 0. When I multiply these two numbers, 2 power 0 into 5 power 0, I get a factor as 1. Yes. Same way 2 power 1 into 5 power 0, factor क्या है? 2. Yes. 2 power 2 into 5 power 0 is what? 4. Yes. Then 5 power 1 into 2 power 0 is what? 5. Yes. 2 power 3 into 5 power 0 is what? 8. Because we have to multiply. We have to multiply. इसीलिए यहाँ पे भी 2 power 0 ले रहे हैं, यहाँ पे भी 5 power 0 ले रहे हैं. Yes. Quickly try this out now. Go ahead. 23,400 के कितने factors हैं? 23,400. How many factors? I'll write down the steps. Prime factorize. Power plus 1 को multiply करते जाओ. 3 आंसर करके फिर चिल करो. Yes. So the tough task here would only be to prime factorize. Yes, सिर्फ prime factorize करना लंबा रहेगा, बाकी सब easy रहेगा. तो हो जाओ शुरू. Shivam, yes, this is a part of number system. Mansi, Nalin, Sakshi, Anamika say 72. Any other answers? 4 लोग बोले, 4 लोग गलत हो गए, तो चलो 4 लोग वैसे भी जिंदगी में गलत होते ही हैं. कोई एक और आ जाओ जो मेरे पूरे पेरेंट्स का जो बेस सिस्टम था, उनका बिलीफ सिस्टम के 4 लोग क्या कहेंगे उसको ब्रेक करेंगे. एक और कोई बोल लो आंसर क्या है. भैया जी से 754. ओके, लेट्स डू दिस, शैल वी? करेंगे चालू? चलो. सो व्हाट डू वी हैव? 23,400. 23,400 can be written as 234 into 100. Yes, 100 is nothing but 2 square into 5 square. Correct? 25 into 400 हो गया, तो 2 square into 5 square. 234 में एक 2 होगा, उसको निकाल लिया तो क्या बचेगा? 117. 117 is nothing but 9 into 13. Correct? 130 minus 13 is 117. सही है. तो ये 2 को भी इसके साथ मिलाना पड़ेगा. So this is 2 cube into 5 square into 3 square into 13 power 1. Agreed everyone? Yes, no? एक बार चेक कर लो, अगर डाउट आ रहा तो एक बार चेक कर लो. सो 8 into 25, मतलब ऐसे कैलकुलेटर में, वैसे करना तो नहीं चाहिए बट
भाई कौन रोकेगा? 23,400. Yes, so for number of factors now, f is given as what? 3 into 1, sorry, 3 plus 1 into 2 plus 1 into 2 plus 1 into 1 plus 1. Do not make the mistake of writing this as into 2 power 1. इसको 2 square और इसको 2 power 1 करोगे तो गलती हो जाएगी, क्योंकि ये 2 plus 1 3 हो जाएगा, ये 1 plus 2 2 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा नंबर, है ना? Yes, don't make that mistake, okay? So this is what? 4, 3, 12, 3, 36, 2, 72. So number of factors f is 72. 4 लोग सही बोलते हैं, मेरा पूरा बिलीफ सिस्टम चला गया अभी, 4 लोग तो सही बोल रहे हैं। कुल हाँ, जो भी कुछ भी भूल गए हैं, 36 सचिन, भैया जी 72, आदित्य 128, 125 जो भी बोला था, एक बार चेक कर लो, अगर कुछ इश्यू हो रहा है तो आस्क, अदरवाइज वे गुड। डन। अच्छा, मैं ये नोटिस कर रहा है कि कोई वीडियो पे लाइक नहीं कर रहा है, सीन क्या है? सीन क्या है? क्विकली आंसर। 60 के कितने फैक्टर्स? जल्दी, 60 के कितने हैं? अपन ये ऑलरेडी कर चुके हैं। 60 के कितने हैं? क्विक, ओ सॉरी, एक और ऑप्शन होना चाहिए था। जल्दी, 60 के कितने हैं? क्विक, how many factors does 60 have? Keshav says D, very good. Mansi says E, Keshav says D, 8. Nalin says 12, Prathamesh says 12, Anamika says 2, Shreyashi says 8. शुभम, ऐसा है कि आप नाराज हो तो फिर मैं बता देता हूं कि द क्वेश्चन वाज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नॉट नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जिन्होंने भी 12 बोला है, आज अप्रैल फूल है और आप बन चुके हैं। ठीक है शुभम, संतुष्टि मिली लाइफ में, जिंदगी में शांति मिली। बढ़िया। ऑलराइट, सो सी टेक्निकली फॉर अ स्मॉल नंबर लाइक 60 अपन बैठ के भी निकाल सकते हैं, है ना? 60 के लिए तो अपन लिस्ट आउट कर सकते हैं। चलो एक बार ट्राई करते हैं, फिर लॉजिक निकालते हैं ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। इनमें से हमें क्या चाहिए? इवन फैक्टर्स। वी वांट इवन फैक्टर्स आउट ऑफ दिस, व्हिच इज व्हाट? 2, 4, 6, 10, 12, 20, 30, 60, जो कि कितने हो गए? 3, 6, 8, 8। यस, बट प्रॉब्लम ये है कि 60 छोटा नंबर है, ये तो बैठ के लिस्ट कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, राइट? व्हाट इफ दिस वाज 600, 6000, 60,000, फंस जाएंगे, है ना? तो लेट्स डू दिस इन अ मोर लॉजिकल वे। सो 60 इज 12 into 5, which is 2 square into 3 into 5. Yes, list down all the factors, which will be what? 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 3 power 0, 3 power 1, 5 power 0, 5 power 1. Yes, we want only even factors. हमें क्या चाहिए? सिर्फ even factors, है ना? मतलब क्या? even factors मतलब एटलीस्ट एक 2 तो होना चाहिए, है ना? इसमें एक 2 है, 4 में एक 2 है, 6 में एक 2 है, राइट? लेट्स राइट दिस डाउन। ये क्या है? 2 क्या है? 2 into 1। 4 क्या है? 2 power 2। 6 क्या है? 2 into 3। 10 क्या है? 2 into 5। 12 क्या है? 2 into 3, 2 square into 3। 20 क्या है? 2 square into 5। 30 क्या है? 2 into 3 into 5। 60 क्या है? पूरा 2 square into 3 power 1 into 5। करेक्ट? तो मतलब अपना सीन क्या है यहाँ पे? एटलीस्ट एक 2 तो होना ही चाहिए, है ना? एटलीस्ट एक 2 तो होना ही चाहिए, राइट? बाकी ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, अपना हो जाएगा। मतलब क्या है? फ्रॉम दिस लिस्ट वेयर डू वी नॉट हैव इवन 1, 2? यहाँ पे 2 power 0 इज व्हाट इज 2 power 0? 1 इवन नहीं है। मतलब यहाँ में से हमें सेटिस्फाई जो कर रहा है वो है 2 फैक्टर्स, 2
बाकी इसको मैं 0 3 पावर 0 5 पावर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो भी होगा. 2 into 3 is 6, 2 into 5 is 10, 2 into 3 into 5 is 30. तो बाकी सब हो रहा है. So this would be my answer. How many? 8 factors. ये कितनों को आया समझ में? yes बोलो. Say yes if you've understood this. हाँ चल करेक्ट. इवन इंटू ऑड, इवन इंटू इवन ऑल्सो. 2 स्क्वायर इवन है तो इवन इंटू इवन ऑल्सो. यस, आया समझ में? या तो अभी इसमें यू कैन ऑल्सो गो द अदर वे अराउंड. फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स. अगर आप में इतना टाइम है, पेशेंस है, तो आप उल्टा भी कर सकते हो, राइट? बट आई विल नॉट मेक यू डू दैट हियर. योर आंसर इज D8. ओके, 12 नहीं. चलो, try this out now. Find the number of odd factors. Go ahead. 1764 में odd factors कितने? Let's see who can answer this real quick. One 1764, huh? Keshav Shreyashi says C. Okay. They're saying there are 9 odd factors. Others? Any other answers? केशव और श्रेयसी तो बोल रहे हैं कि 9 ऑड फैक्टर्स हैं. एनीवन एल्स? साक्षी says none of these. Pranay says 9. Pallab is asking me to wait. Mansi says 9. भैया जी says 9. साक्षी डी बोल रहे हो तो आंसर क्या है? None of these मतलब which of, then what would be your answer? So look at 1764. अभी 1764 बड़ा नंबर है, राइट? इसको प्राइम फैक्टर करते करते दिमाग का दही हो जाएगा, राइट? So what would we do here? Look at this. First try and divide it by a bigger number. Yes, 764 में क्या है? You have, this is divisible by 9, correct? 10 plus 8 18. This is divisible by 9. So 1764 में से आप पहले 9 निकाल लो. Yes, 9 is what? 3 square, है ना? तो मतलब एक बार 3 से डिवाइड किया, फिर वापस 3 से डिवाइड किया. Yes, once you take that out, then you can do it. So 1764 by 9 is what? 196. Yes, 196 is what? 14 square. 14 square क्या है? 2 square into 7 square. Agreed? Everybody? So 9 into 4 into 49 is 1764, है ना? अब इसमें से मेरे को क्या चाहिए? मेरे को सिर्फ odd factors चाहिए. I want only odd factors, right? So let's list down all the factors. 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 3 power 0, 3 power 1, 3 power 2, 7 power 0, 7 power 1, 7 power 2, right? What do I not want? I want all odd factors. That means I don't want any even factor, right? Even factor बनाने का reason क्या है? This and this, correct? 2 या 4 अगर involved है, if we have 2 or 4, then we will have an even factor. तो ये दोनों हमें नहीं चाहिए. Yes, these are something that we don't want. So out of these 3 factors हमें सिर्फ एक चाहिए यहाँ पे. Here all 3 will work. Here also all 3 will work. So 3 into 3 into 1 is 9 factors. Yes, so option C, 9 is your right answer. Got it? Everyone? So others who said none of the above. Sachin, Sakshi, चलो change हो गया Sakshi का answer towards the end.
नलिन यू ऑल्सो। डन है, इसमें कोई आपको डाउट? एनीबडी? एनीवन? So they'll give you combination like this, right? We will do some advanced questions also on this in special, okay? I'll tell you when we are doing this, but we'll do some advanced questions also later. तब मैं आपको बताऊंगा कि they'll ask you a question, how many are factors of 14? Yes, how many are factors of 21? ये सब भी होगा, yeah? So same process है, same process. जो चाहिए उसको रखो, बाकी सबको optional करो. Yes? चलो. Now let's go to sum of factors. Yeah, let's go to sum of factors. Now let's take a small number again. Let's take 6 for that matter. चलो 6 नहीं, 6 तो बहुत छोटा हो गया. Let's take 12 for that matter. Right? 12 के factors क्या होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. Right? If I were to find out the sum of these, what will I do? देखो ऐसे 12 है तो छोटा नंबर ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, राइट? दिस इज 10, दिस इज 6, 16 प्लस 12 28. ऐसे ऐड करना इजी है, नो प्रॉब्लम, या? बट व्हाट इफ दिस नंबर वाज बिग? लेट्स से नंबर एज स्मॉल एज 60 ऑल्सो, वहां पर भी अटक जाएंगे, है ना? तो हियर व्हाट यू डू, इफ यू प्राइम फैक्टराइज द गिवन नंबर, टेक द नंबर, प्राइम फैक्टराइज इट, एबीसी प्राइम है, ठीक है? जरूरी है ये. ABC are prime numbers. Yes, once you prime factorize it, the sum of all given factors is what? A to the power p plus 1 minus 1, that is a to the power p plus 1, क्योंकि 2 power 0 को भी इंक्लूड करना है, minus 1 divided by a minus 1 into b to the power q plus 1 minus 1 divided by b minus 1 and so on, right? तो 12 के केस में ट्राई करते हैं. Let's check if 12 works, right? 12 can be written as 2 square into 3 power 1. Yes, 2 square into 3 power 1, right? So 2 to the power 2 plus 1, that is 3, minus 1 divided by 2 minus 1, that is 1, into 3 to the power 1 plus 1, that is 2, minus 1 by 3 minus 1, which is 2. This should be our answer. So let's quickly check. 8 minus 1 7 into 3 square is 9, 9 minus 1 8, 8 by 2 is 4, 7 4s is 28. आ गया सेम 28 28. Does this make sense guys? Yes, no? समझ में आया क्या ये? हाँ या ना, जल्दी बताओ. Yes, so can you guys quickly try for 60? 60 के लिए ट्राई कर सकते हो. 60 is 2 square into 3 power 1 into 5. So what will be the sum of all the factors of 60? कैसे करोगे? 2 power 3, that is 8 minus 1 by 1 into 3 square minus 1 by 2 into 5 square minus 1 by 4. Yes, this will be 8 into 7 into 4 into, this is 24 by 4, 6. Yes, which would be how much? 28 into 6 or 42 into 4 is 176, है ना? 42 into 4 is 168. समझ गए? Yes or no? Yes. मेरे को आप लोगों के चैट क्यों नहीं दिख रहे? समझ गए? चलो, ब्यूटीफुल. Right. Quickly try this out now. Find the sum of all the factors of 90.
कहाँ पे बोल रहे हो शुभम? 1, 2 और 4 कैसे लिया? द फैक्टर -1, जो भी फैक्टर है उसका -1, उसको डिनोमिनेटर में ले रहे हैं अपन. टेक द फैक्टर subtracted by 1, that becomes your denominator. So Shreyashi, Mansi, Keshav, Nalin say A, Sakshi says A, very good. Others? Aditya says A, beautiful, very good guys. और कोई? So let's do this. 90 को कैसे लिखेंगे? 90 is 30 into 3 or 15 into 6, 45 into 2. Yes, so 2 into 9 into 5. Yeah, so take the first one, 2 square minus 1 by 2 minus 1 into 3 cube minus 1 by 3 minus 1 into 5 square minus 1 by 5 minus 1. Now you'd be wondering कि ये कैसे आया, right? If you're wondering कि ये formula कैसे आया, how did we get this formula? This involves combination. Yes, ये जब हम PNC करेंगे तब मैं समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा better समझ में आएगा. I'll teach you when we do PNC. ठीक है? So what do you have here? 4 minus 1, 3 into 27 minus 1, 26, 26 by 2, 13 into 25 minus 1, 24, 24 by 1 is 24 by 4 is 6. Yes. So what is this? This is 18 into 13, that is 180 plus 54, 234. That's your answer. Yes. यहाँ पे प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है ना. We are actually not forming a progression here. Look at this. इसमें you will have 1, 2, 3, 5, 6. Yes. 9, 10, 15, 15, 6 times ना. Yeah. 5 कितनी बार? 18 times, 30 times, 45 times, 90 times. यहाँ पे कोई प्रोग्रेशन नहीं बन रहा है. ठीक है, तो प्रोग्रेशन नहीं है, PNC का सीन है, मैं बताऊंगा आपको कैसे. यस, चलो. नाउ लेट्स गो फॉर प्रोडक्ट. प्रोडक्ट बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी, बहुत ही सही है, राइट? सेम नंबर लेते हैं, 12 ही लेते हैं, बहुत इजी. 1, 2, 3, 4, 6 and 12, है ना? What will be the product of all the factors? इन सबको मैं अगर मल्टीप्लाई करने बैठूं, if I multiply all of this, 1 into 2 into 3 into 4 into 6 into 12, this is basically what? 1 into 12 is 12 once, 2 into 6 is 12 twice. Yes, 12 twice. 3 into 4 is 12 thrice. Done. So you're basically taking what? Pairs of the numbers. Yes, number n raised to the power pairs that you can form. Yes, so if n has f factors where a, b and c are prime, then product of all the, if the factors are p plus 1 into q plus 1 plus r plus 1, then product x is given as n raised to the power f by 2. Yes, n raised to the power f by 2. कितने फैक्टर्स हैं? 6 फैक्टर्स है. 6, 12 raised to the power 6 by 2. समझ रहे हो? Yes. But what if we had an odd number of factors? What if we had odd number of factors? जैसे 36 हो गया. Yes, 36 के कितने फैक्टर्स हैं? 36 is 2 square into 3 square, करेक्ट? इसके फैक्टर्स कितने हो गए? 9. इसमें क्या करेंगे फिर अपन? What will we do in this case? So what do you do? Take one less prime number, one less number, which is 8. So our product is nothing but 36 raised to the power 8 into 6.
क्योंकि 6 कितनी बार है, 2 बार है, 6 अकेले में पैर हो रहा है ना, तो 6 तो अलग से हो गया, बाकी देर आर 8 पेयर्स दैट यू कैन मेक आउट ऑफ 36. समझ में, नॉट 8 by 2. So number of the product of all the factors is 36 to the power 4 into 6. समझ गया? That's basically 6 power 9. Yes or no? Understood or not? जल्दी से बोलो हाँ या ना. समझ गए? चलो एक practice question. Quickly try this out. Product of all the factors of 600. 600 के कितने factors रहेंगे? नहीं, कितने प्रोडक्ट क्या रहेगा फैक्टर्स के? Pranay says C, Mansi says D, C, D, okay. Sarveshwari says B, Nalin says D, Shreyashi and Keshav say B, okay. साक्षी भी बोल रहे हैं, और कोई? सारे बी बोल रहे अभी. मानसी ऑल्सो सेज बी, वेरी गुड. नलन सेज बी, सुपर्ब. चलो लेट्स डू दिस. 600 इज व्हाट? 8 into 75, दैट इज 3 into 5 स्क्वायर, है ना. 8 into 75. 4 into 150 करो. 150 is 2 into 75, so that's 8 into 75. yes. तो यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स f is what? 3 plus 1 4, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3. This is 8 3 times 24. So our product of all the factors is nothing but the number n raised to f by 2. This is what n क्या है? 600 raised to the power 24 by 2, which is 600 to the power 12. खत्म. इसमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं. ऑप्शन बी डन. यस, ब्यूटिफुल गाइस, अमेजिंग वर्क, अमेजिंग वर्क. तो अभी कुछ भी फैक्टर्स को लेके कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आए, यू विल बी एबल टू डू इट, राइट? यस. तो चलो आई विल गिव यू अ चैलेंज नाउ. आर यू गाइस रेडी फॉर अ चैलेंज? बिफोर वी लीव एक चैलेंज करेंगे. लेट्स सी इफ यू आर एबल टू आंसर दैट. अगर ये आपसे आंसर हुआ, हाँ, अगर ये आपसे आंसर हुआ तो देखते हैं. आज पहला दिन है अप्रैल का, फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. लेट्स सी आपका साल कैसे जाएगा. यू ऑल रेडी? सो आई विल पुट अप द क्वेश्चन. आई विल गिव यू 3 minutes. आई वांट द आंसर्स टू दैट. यस, रीड द क्वेश्चन. टाइम चालू है, 3 minutes. क्विकली ट्राई दिस आउट. आंसर हुआ तो प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री. Nalin is the sponsor for that. नलिन मरवाओगे भाई, नहीं करवाने ऐसे चैलेंज फिर तो. चलो क्विकली ट्राई दिस. अच्छा गाइस, if any one of you has not already hit like on this video, तो go ahead and do that, okay? ट्रांसलेट करें हिंदी में. ओके. एक गेम है जिसमें 1000 बालक हैं, ठीक है, जो एक सीधे लकीर में खड़े हुए. गूगल ट्रांसलेट से भी खराब ट्रांसलेट कर रहा है, आई नो, बट ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू. सो स्टूडेंट्स ऐसे खड़े, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 1000 स्टूडेंट्स खड़े. यस,
और उनके पीछे जो है टीचर्स खड़े हैं, उनके ऊपर भी नंबर लगा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके 1000। यस, तब ये क्या है कि ईच ऑफ द टीचर्स हैव टू टैग अ स्टूडेंट। टैग मतलब एक मार्क लगाना है, थब्बा लगाना है, ठीक है, कि ये मेरे नंबर से डिवाइड हो रहा है। जैसे फर्स्ट टीचर जो है, फर्स्ट टीचर आएगा, वो चेक करेगा कि 1 1 से डिविजिबल है, 1 2 से डिविजिबल है, 1 3 से डिविजिबल है, 4 5 6, मतलब इस केस में सारे 1000 बच्चे डिविजिबल होंगे। यस, फिर 2 आएगा, 2 आके देखेगा कि भाई मेरे से तो सारे डिवाइड नहीं हो रहे, मेरे से सिर्फ 2 4 6 8 ऐसे करके 1000 तक हो रहे डिवाइड 2 के। फिर 3 आएगा, मतलब 3 आएंगे, टीचर है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट। 3 आएंगे, 3 आके चेक करेंगे भाई मेरे से सारे तो नहीं हो रहे बट 3 हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं, 12 हो रहे हैं, ऐसे। तो दे सेइंग एनी स्टूडेंट हु गेट्स टैग्ड लेस देन 4 टाइम्स, यस, एनी स्टूडेंट हु गेट्स टैग्ड लेस देन 4 टाइम्स विंस द गेम। तो ऐसे कितने विनर्स रहेंगे? मैं टाइमर फिर से चला रहा हूं, जल्दी करो कोशिश, क्विक। I started the timer again. The deal is number of times a student gets tagged should be less than 4. ऐसे कितने स्टूडेंट्स रहेंगे? सूची से 16, ठीक है, चलो मैं सारे आंसर्स तो रिकॉर्ड कर लेता हूं। सूची से 16, अदर्स, केशव सही तो जा रहे हो, आगे और कोई? ध्रुव से 22, 16 22, और इनके अलावा और कोई? जल्दी दिमाग चलाओ, दिमाग चलाओ। देखो स्टूडेंट का नंबर लिखो यहाँ पे पहले, ठीक है। 1 को कितने लोग टैग करके जाएंगे? कितने लोग 1 को टैग करेंगे? सिर्फ 1 को टैग करेगा, करेक्ट। टीचर 1 will tag 1, only that teacher will tag 1, no one else. So 1 is our answer, yes. How about 2? 2 gets tagged by 1 and by 2, so 2 is our answer. How about 3? 3 gets tagged by 1 and 3, 3 is our answer. How about 4? 4 gets tagged by 1, 2 and 4, तो इसके भी कितने? लेस देन 4, so 4 also is our answer. How about 5? 1 and 5, yes. How about 6? 1 2 3 6, लेस देन 4 बोला था तो 6 नहीं होगा। 7 का क्या सीन है? 1 7, yes. अभी आपको पैटर्न दिख रहा है कि नहीं? 8 का क्या सीन है? 1 2 4 8, नो। 9 का क्या सीन है? 1 3 9, यस। कुछ बन रहा है अभी, सीन बन रहा है, कुछ लॉजिक आ रहा है। अभी केशव आपने 16 बोला है, राइट? केशव बोल रहे 16 का चेक करो। 1 टैग करेगा, 2 टैग करेगा, 4 टैग करेगा, 8 टैग करेगा, 16 भी टैग करेगा। कितने हो गए? 5 हो गए। नहीं, नो। Perfect square still 9 only. Will 25 not be counted? 25, मानसी 25 काउंट नहीं होगा। 1 5 and 25 काउंट होगा ना। 49 नहीं काउंट होगा। 49 1 7 49। पैटर्न देख रहे हो? पैटर्न बताओ, जल्दी बताओ। लेट्स सी हु कैन टेल द पैटर्न हियर।
1 को छोड़ के 1 है प्लस 2 3 5 7 11 चेक करो 11 1 and 11 we know prime numbers have only 2 factors तो prime numbers सारे all prime numbers less than 1000 प्लस अभी और कौन से 4 है 9 है 16 नहीं है मतलब not all perfect squares but perfect squares of what prime numbers 49 हो रहा 121 होगा 111 121 राइट 64 होगा क्या नहीं 1 2 4 8 यहीं पे खत्म हो गया ये तो राइट 16 32 64 ये नहीं हो रहा समझ रहे हो सो व्हाट 1 प्लस ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 1000 प्लस ऑल द स्क्वायर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बट these squares should also be less than 1000 understood तो अब क्या होगा we know 1 is there plus how many prime numbers less than 1000 कितने प्राइम नंबर्स होते हैं लेस देन 1000 168 प्राइम नंबर्स आर देयर लेस देन 1000 दिस इज फॉर यू टू ईदर नो या फिर बैठ के बनाओ लिस्ट राइट दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कभी भी काम आ सकता है जैसे कि ऐसे केस में यस 1 to 1000 के बीच में 168 प्राइम नंबर्स है प्लस स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 1000 यस स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 1000 तो हमें पता है कि if I take first 100 numbers yes not even first 100 numbers first 30 numbers 35 numbers ले लो चलो 35 square is 1 2 2 5 we know 33 square yes 31 square in fact 31 square is 961 फिर उसके बाद 32 square goes up to 1024 so 31 square तक के प्राइम नंबर्स हमें लिखना है 31 तक के प्राइम नंबर्स क्या क्या होंगे 31 तक के प्राइम नंबर्स क्योंकि उनके स्क्वायर 1000 के नीचे रहेंगे राइट सो यू हैव 2 4 बोल रहा है मैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 and 31 करेक्ट यही है सारे 2 3 5 7 11 बराबर तो ये सारे दैट इज 2 4 6 8 11 दिस इज आवर आंसर विच इज हाउ मच 179 180 यस तो कितने लोग जीते इस गेम में कितने लोग जीते 251 श्रेयसी number of prime numbers less than 1000 are how many 168 only no 1000 से कम is 168 yes cool तो इनके स्क्वायर्स भी इंक्लूड होंगे 4 9 25 49 121 169 289 यस ये सारे भी काउंट होंगे कूल एवरीवन एनी डाउट्स किसी को कोई डाउट 361 23 स्क्वायर 29 स्क्वायर ऐसे so 31 square was what 961 yes यहां से यहां तक yeah so 180 is the answer तो चलो ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस we will be doing now every day we'll do some of these challenges every day or at least once every week राइट वंस एवरी वीक तो पक्का करेंगे ही करेंगे बट ऐसे चैलेंजेस रोज करेंगे
please ensure that you attend these sessions 8 p.m. to 9 p.m. मैं आपको in the group, if you are not a part of the Telegram groups, guys, please become a part of these groups. I will share with you the schedule for the entire week in the beginning of the week itself, ताकि you are aware of what we have planned for the rest of the week. Yes, and guys, this Sunday, please do not forget, this Sunday you have your combat at 12 p.m. Make sure you become a part of this. Use my referral code Surana Live when you register. This is a free test. You don't have to pay anything for it. All you have to do is download Unacademy's learning app from your Play Store, which is also a free app. Download, register yourselves. When you register, use Surana Live. Yes, use Surana Live when you register. That way, you know, people will be aware कि आप हाँ भाई मेरी बात सुन के आप आए हो यहाँ पे, right? And there's an ask a doubt feature also, which a lot of people are not still aware of. Ask a doubt feature is for people who have enrolled themselves in Iconic or Plus subscription, where you can directly ask doubts. You don't have to wait for anyone. You don't have to become a part of any Telegram groups. You don't have to wait for people to respond. You can directly just click on ask a doubt, take a picture or select one from your gallery, highlight the part where the question is there and just mention what section it's from, and you'll get the solution for it. So to make use of any of these, get yourselves a Plus subscription by taking 12 or 24 months. You can also take 1, 3 or 6 months, but the most beneficial are 12 and 24 month one. Use Surana Live as my referral code to get a 10% discount. Yes, you can also take Iconic if you're looking for a personalized mentor, a personalized report analysis of all the tests, all the quizzes, all the mock tests that you give. तो अगर आपको वो सब भी चाहिए, and if you want step by step help for OMETs, कौन से एग्जाम्स लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं, सब पूरा गाइडेंस आपको मिलेगा Iconic में. And take the 12-month or the 24-month package. Use referral code Surana Live. So for about 2,000 per month or 3,000 per month, now you'd be able to get all of that. Yes, there's also no cost EMI options available. Use my referral code Surana Live wherever. I will see you tomorrow at 8 p.m. for now. कल 8 p.m. में आपको मिलूंगा. Yes, on the next lecture on factors and multiples. And okay guys, tomorrow we also have a special class. Tomorrow we have a special class at 10 a.m. Please ensure that you become a part of this special class at 10 a.m. I'll share with you the link in the Telegram group. Yes. Alright guys, thank you very much. हाँ सूची, कल 10 p.m. है, 10 a.m. को है, कल सुबह 10 बजे है स्पेशल क्लास. Topic is we'll be doing PYQs on profit and loss, previous year questions on profit and loss, as well as SICI और profit and loss पे previous year questions करेंगे. Yes. Okay guys, thank you very much for being a part of this group for this lecture. I'll see you all tomorrow 10 a.m. and then at 8 p.m. Until then, keep yourself safe and happy. Good night, keep learning, and let's crack it.